Just don't wait for someone to knock your door. Just be the door beater or door breaker when you want to excel in any kind of. टू द चैनल टेकक्रिट। सो आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं स्टार्टअप्स अबाउट द स्टार्टअप कल्चर्स की, क्योंकि स्टार्टअप कल्चर्स आप आज के टाइम में देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बूमिंग पे है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ द शार्क टैंक, क्योंकि उसकी वजह से स्टार्टअप कल्चर अब और ज्यादा लोग जानने लगे हैं, उसको करने में इंटरेस्टेड होने लगे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं आपके पास, लाइक एमबीए ट्रैवल एंड मेनी ऑफ द रोल मॉडल्स आर गेटिंग क्रिएटेड नाउ। सो ऐसे ही हम जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा बेसिक जो प्लेटफॉर्म रहता है कि हम न्यू एक्सपीरियंस पीपल्स के साथ कनेक्ट होते हैं। सो today we will completely discuss about the startup. So here we are connected with Onkar today. So I will give you a brief introduction about Onkar. So actually Onkar is a founding member of a SkillValley, और SkillValley क्या है ये चीज हम आगे डिस्कस करेंगे, so उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। And he is connected with me from around more than 1.5 years or 2 years. We are connected to each other, and he's really experienced in like इनका अपना स्टार्टअप है, सो दे हैव अ रियली गुड एक्सपीरियंस एंड चैलेंजेस फेस करना। सो यही चीजें आज हम ओनकार के साथ डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में कि व्हाट आर द चैलेंजेस दे आर फेस्ड एंड हाउ टू स्टार्ट। एटलीस्ट अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया है अबाउट द स्टार्ट टू गेट स्टार्ट समथिंग, सो हाउ टू डू दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओनकार, वेलकम टू टेकक्रिट। नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव अस अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर्स। Hello, audience, and Onkar this side from SkillValley. Actually, whatever the description Onkar has given it to me, it's not like that, but still, I'm just a keen tech geek who is investing my time on tech and startups. I basically talk about startups and tech as I'm also undergrad, but building my startups in the 2 years since now, and having a marginal bit of audience when it comes to startup building, startup culture, and how you just need to focus on the little edge cases of whatever you are doing, whether it is related to tech or whether it is related to your startups, because nowadays what we are seeing in India is the boom of the ban, whatever we talk about the startups. It's the buzz of the startups, all thanks to Shark Tanks or whatever media promotions that we have. But currently, if you look at the audience, everybody is interested about either getting into the jobs for the startups or starting their own startups. So I hope so this session will be great with you, and That's great. To start. Sure. So Onkar, in every session we have some specific topics or specific things जिस पे हम लोग discuss करते हैं. So now I want to start those things. So first of all, let us know about the SkillValley. कि SkillValley क्या है, ये हम सभी लोग आज जानना चाहते हैं. So please give us about what is SkillValley. Okay. So as you're saying that SkillValley. So SkillValley is basically an edtech startup, but what the aim and what the niche we are handing over at SkillValley is actually different, and that's the exact differentiating factor when you talk about SkillValley's production rules and whatever we discuss about. SkillValley का जो basic aim है, like if you are talking about a lower tier 2 or lower tier 3 colleges, and they have this posh audience, right? But जो सबसे बड़ी चीज जहां पर हम लोग लैग कर जाते हैं is around the knowledge and the sense of information and the flow of information between the students. Like let's just say that we know this word called FANG. We always is crowded with this word, right? Everybody needs a tag after his name regarding like SD at Google, SD at X, or SD at Y, or SD at Z. But we actually don't know about the stuffs that are outside in the world, like foreign case startups. Very few people know about it. So if I talk about in a single line, that SkillValley in its coming 8 months is projected towards being a one-stop platform for those students who want to get into not for just a naming convention after the name, but really want to excel on tech, on a tech-based profile, and really want to enhance their skills, plus earning what they can't even imagine. So this is the only niche we are taking forward. And if I talk about the SkillValley's projection, we are having some kind of products that are going to be built up around this 8 months. These products will include stuff such as portfolio website maker, a dashboard, a one-stop dashboard for the students where they can just come, write code, write their project, present it to the interviewer, and just have their dream job in their own hands within just a click and within just a go. Amazing. It means it will provide a complete solution of tier 2 and tier 3 students. That is really your niche was absolutely amazing. I would like to mention, and your goal is absolutely like it will help a lot of students, क्योंकि tier 2 tier 3 colleges में यही maximum problem आती है कि एक तो skill enhancement that you are providing, and second job assistant and people's कि कहाँ पे अपनी resume send करनी है, कैसे job grab करनी है अच्छे level की. So we have a lot of opportunities there in the pool, like in the technical industry के pool में बहुत सारे jobs हैं, but people are not that much aware and that much like we can say कि उनके skills उतनी up to the mark. But if you are developing both of the things, it was really amazing and destroying your platform. Absolutely mass public will come for sure.
there's one more thing, like one more idea, like why we only choose with this tier 2, or why just we only started with tier 3 students. It's because, like, let's just say that you're Krit, right, and you have a large presence on social media. So what the edtech space and what the edtech businesses are currently doing is, by just giving the domain and by just the personal branding, they are just giving the courses. The courses are great, but what about the pay? What about the price? It's around like 40K, 45. So for a student who is tier 3, and their pay scale, like their father's income is also on that tier 2 or tier 3 list, it's not possible for them to get into those things. So it's not about, like, money should not be the factor. You can't get that tech stack into your hand, or money should not be the factor. You will not able to achieve that height of the universe. So this is what we are having those plans around. All conversations are around this kind of stuff. That's absolutely great. Whatever you are explaining, completely get it. So yeah, ये reason बिल्कुल होता है, and if you are providing solutions to this, it was really great. So आज के मॉडर्न टेक पे बात करते हैं कि आज की जो हम एज ए स्टूडेंट प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं, तो कौन से मतलब उन्हें किस टेक्नोलॉजी और किस चीज में ऐसे मतलब उन्हें इनहेंस करना चाहिए अपनी स्किल्स को, कैसे उन्हें टाइमिंग्स देनी चाहिए? So, आज के अगर हम टेक स्टैक की बात करें, सो टेक स्टैक इज अ थिंग जो कि हर 2 महीने, हर 1.5-2 महीने में इवॉल्व होता जा रहा है, वो हम लोग सबको पता है. बट करंटली जो जमाना है, इट्स लाइक हमारी जो नीश है, दैट इज ऑलरेडी अराउंड वेब एंड डेवलपमेंट अराउंड वेब. और सो बेसिकली इसका रीजन ये है, मार्केट में, नॉट अबाउट इंडिया बट अबाउट फॉरेन मार्केट्स, डेवलपर्स की जो डिमांड है raising exponential. I'm actually using this word exponential because we had several meetings with foreign startups, their HRs, their developers, and they are in a zeal to get more and more developers out there. So getting into developing stuffs, getting into something such as UI designing, graphic designing, this kind of stuffs are something will be something कि like आप थोड़ा सा काम करते हो, थोड़ा सा अपनी चीज को enhance करते हो, and you get a big and huge opportunity that waiting you on the other side. So you just need to crack that simple code. वो एक कोड होता है, इसको आपको क्रैक करना पड़ता है. वो कोड बेसिकली क्या होता है कि you need to have your social media presence first of all, because most of the kids are generally क्या करते हैं कि like वो हमारा एक पुराना पैराडाइम एक बना होता है कि यार पेपर्स आ रहे हैं ना, तो मोबाइल, ये इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे कर दो, ठीक है, ये किताबें पढ़ाई करो. No, things are now changing. Make a personal brand for yourself. What we are experiencing in SkillValley is like, जो अगर मैं अपना अगर एक पर्सनल ब्रांड इधर ट्विटर, इधर लिंक्डइन, इधर इंस्टाग्राम पर मैं अपना एक पर्सनल ब्रांड बना रहा हूँ, तो लोग जब मुझसे जुड़ रहे हैं तो इनडायरेक्टली वो SkillValley से जुड़ रहे हैं. यही अगर एक टेक बंदा सोचेगा, यही अगर टेक बंदा के साथ सोचेगा, अगर मैं ओंकार एक टेक बंदा हूँ, मैं अगर अपने नाम का एक मतलब एक अच्छा लेवल बना रहा हूँ सोशल मीडिया में आज की डेट में फाउंडर्स, सारे रिक्रूटर्स, लाइक अगर आपने स्टार्टअप को जाके आगे जाके प्रमोट मतलब अप्रोच करना है, यू वांट टू गेट इनटू स्टार्टअप थिंग्स, देन सारे फाउंडर्स सोशल मीडिया बैठे हुए हैं. हायरिंग्स मैं कह सकता हूं कि 65 to 70% ऑफ द हायरिंग्स आर फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. यू जस्ट गेट इनटू देयर, फाउंडर को मैसेज कर दिया कि यार जो वेबसाइट मैं आपकी देख रहा हूं, आई कैन रीडिजाइन दैट वेबसाइट एंड इट विल लुक फिनोमिनल. जस्ट अ कोल्ड डीएम टू हिम and then you can see that magic. It's not about HRs, technical round, ये round, वो round. आजकल ऐसे direct doing the things. Yeah, exactly. This is the thing. Building a social media presence. Second thing, it comes building a tech stack. Now, here the thing comes. बहुत सारे messages, बहुत सारे DMs ये आते हैं कि भैया क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, errors नहीं पढ़ रहे हैं, वो नहीं. तो मैं बस एक सा आंसर देता हूँ, जब एरर्स की बात आती है, फिर किसी भी चीज की बात आती है, कि एरर ना आपके एक परछाई की तरह होती है. जैसे आप जब वॉक करते हो ना, तो परछाई आपके साथ होती है, और विदाउट परछाई का आदमी भूत कहलाता है. सही है. तो एरर्स वही होता है कोड के साथ. जब तक आप कोड में एरर्स नहीं आते आपके, तब तक तो आपने कुछ सीखा ही नहीं. सही है. सेकंड थिंग इज दिस कि आपको पढ़ना कहाँ से होगा. आप किसी और से मत पूछो, लाइक मुझसे भी मत पूछो, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि सबके पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है. किसी को हिंदी जो लिरिक्स होती है वो प्रेफर करते हैं, कोई इंग्लिश लेवल प्रेफर करता है, कोई एडवांस लेवल से स्टार्ट करता है, बिकॉज़ दे हैव देयर ओन माइंड पावर्स, राइट. एवरीबॉडी हैज डिफरेंट टीचिंग कैपेबिलिटीज. सो आप अपने जगह गूगल्स में देखो, हिट एंड रन करो, ट्राई 3 to 4 वेबसाइट्स, try 3 to 4 playlists, check it out. 4 दिन टाइम दो, 5 दिन टाइम दो, बेस्ट वाला पकड़ो, लग जाओ. दिस इज द सेकंड. थर्ड थिंग, एक जो चीज आती है कि हम लोग सबने देखी हुई कि हम लोग कहीं से भी कोर्स परचेज करते हैं, either that is from any of the XYZ platforms, we have those whole bulk list of uncompleted course, जिसका रेशियो कंप्लीटेड कोर्स से ज्यादा होता है. अब ये एक सबसे, और इसको हम बड़े कूल वे में कहते हैं कि यार मेरे तो 4 वो XYZ प्लेटफॉर्म के कोर्सेज हैं जो अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं करे. बट नो, दैट इज वेयर यू आर लैकिंग इट. अगर आपने वो कोर्स खरीदा है, वेल डैम श्योर मेक करो कि आप उस कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो. प्लस नॉट ओनली कंप्लीटिंग दैट कोर्स, एटलीस्ट 2 or 3 प्रोजेक्ट्स ऑन इट. एक प्रोजेक्ट आप कॉपी कर सकते हो, दैट्स परफेक्ट. 2 प्रोजेक्ट आप कॉपी कर सकते हो, परफेक्ट. 3 प्रोजेक्ट कॉपी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. बट चौथा, पांचवा और छठा जो प्रोजेक्ट होने वाला है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते. उसमें आपको खुद से जाकर स्टैक ओवरफ्लो, गिटहब्स, ओपन सोर्स कम्युनिटी से हेल्प ले लेके कई चीजों में आपको एक्सेस करना पड़ेगा. तो यही सारी 3-4 चीजें होती हैं. सोशल मीडिया प्रेजेंस, पर्सनल ब्रांड बिल्डिंग, इसी के अंदर आपकी कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट, आपके लोगों को पहचानने का टेस्ट, ये सारी चीजें वो उस एक एस्पेक्ट में आ गई. और दूसरा और तीसरा एस्पेक्ट जो होगा, ये आपके टेक की चीजों को एक शेप अप करेगा टू बी बेस्ट प्रेजेंटर फॉर एनी ऑफ द स्टार्टअप्स और एनी ऑफ द जॉब्स यू आर अप्रोचिंग फॉर.
That's really great. So Onkar, the next thing that I want to discuss with you, what are the major challenges that a person face if he is going for the if he is going for the startup? So वो major challenges क्या हैं और उन्हें कैसे crack कर सकते हैं? So we have to discuss about that. Major challenges for startups. That's a very good question actually for you. Uh, सबसे पहला तो मेजर चैलेंजेस फॉर अ पर्सन अप्रोचिंग फॉर अ स्टार्टअप से पहले मुझे ये देखना चाहिए कि मेजर चैलेंजेस दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर माई सेल्फ व्हाइल आई एम परस्यूइंग एनी काइंड ऑफ डिग्रीज, क्योंकि सारा जो माइंडसेट है वहीं से चेंज हो जाता है। हम कॉलेज घुसते हैं, हमें बताया ही जाता है कि ये कोई XYZ कंपनीज है ऑफरिंग 4.5 और 5 LPA ऑफर्स एंड इफ यू गेट दिस यू आर ग्रेट, बट दैट्स नॉट अ फैक्ट। अपने आप को हमेशा एक शेल में लिमिट कर देते हैं कि नहीं यार ये 8 LPA वाला तो यार ये इनके लिए है, हम नहीं जा सकते शायद इसमें। नो, क्यों नहीं जा सकते? 4 साल आपके पास भी है, 4 साल उनके पास भी है, यू कैन आल्सो डू दिस स्टफ। एंड मैं आज के डेट में बता दूं, फ्री रिसोर्सेज इतने सारे हैं। मैंने जितनी भी टेक स्टैक मैंने जो मर्न करी है, जो भी करी, जो भी मैंने वेब पे काम करा, मैंने आज तक शायद ही पेड कोर्सेज में इन्वेस्ट करा होगा सीखने के लिए। मैं सारे फ्री कोर्सेज उठाता हूँ और मैं सीख जाता हूँ, सही है। तो ये एक है। एंड स्टार्टअप्स को अप्रोच करने के ना तरीके होते हैं। आपको दो तीन चीजों के बारे में बड़ी अच्छी आइडिया होनी चाहिए। सबसे पहली आइडिया आपको होनी चाहिए कि आपका कन्वर्सेशन कैसा है। कन्वर्सेशन स्किल्स इन द सेंस दैट यू आर नॉट टॉकिंग टू अ फाउंडर और HR ओवर अ वन ऑन वन मीट, दे विल नॉट कम। आप उनसे ऑफलाइन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे डिस्कस कर रहे हैं? आप उनसे डिस्कस कर रहे हैं थ्रू कोल्ड ईमेल्स या कोल्ड मैसेजिंग। ये एक वो स्किल होती है जो कि बड़ी बारीक एंड स्मूथ लाइन होती है, बट अ पर्सन हु इज गोइंग टू मास्टर दिस स्मॉल थिंग ना, ही इज गोइंग टू मेक इट बिग एनी टाइम। लाइक मैं अगर अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी, if I'm like in the first year of my college I started this freelancing journey. Freelancing में मेरे पास clients कैसे आते थे? बहुत लोग पूछते हैं तो उनको लगता है मैं freelancer.com या Fiverr में या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे आता हूँ। No, I don't go to the platforms. I simply do that. Like if I'm visiting some kind of websites and I see this UI and everything, and if I feel that if I'm good at it, मैं इससे बेटर बना दूंगा। मैं 10 दिन इन्वेस्ट करता हूँ अपना टाइम फ्री का, मैं वो बनाता हूँ, उस कंपनी के फाउंडर को मेल करता हूँ, एंड 75-80% chances are there when the company's founder is going to reply you and he's damn sure going to reply you, because startups को चाहिए होता है काम करने वाले, उन्हें ये नहीं चाहिए होता है कि आप एमटेक करी है कि क्या करी है, it doesn't matter. So there are 2 or 3 things जहां पर आप, ये सारी एज की चीजें हैं, बट ऐसी बारी चीजें होती हैं कि बंदा इसके कारण डिफर कर जाता है अराउंड इफ यू गेटिंग अ 10 LPA ऑफर और 45 LPA ऑफर, बस इतना का डिफरेंस पड़ जाता है जो कि इतना बहुत ज्यादा हो जाता है, बट सो you just need to manage that stuff. Yeah. That's great. So now, Onkar, one final thing that I need to ask: what is the message or guide, tips and tricks that you want to provide to the students जो अभी pursue कर रहे होंगे, like engineering, and if they want to go for job and either they want to own their own startup, तो उन्हें इस टाइम पे किन चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए? So there are 2 types of questions that you asked me. The first question is on a tech aspect or students aspect, like how they're going to approach a company or how they're going to mold themselves around a startup's ecosystem or a startup's environment. And the second question, I'm just coming back into it after answering the first one. Sure. So as I said, the answer to the first question is basically having a tech stack, और उस tech stack को आपने ऐसा बनाना है कि if anything that you are being asked to it, you just need to answer it. One example मैं देता हूँ, like we are conducting a cohort, that's a web dev cohort, and इस cohort की हमने क्या करी थी, like we took around like 557 registrations were there, but we only chose 39 out of it. What's the reason behind it? That's great. Because जब हम बात करते हैं, like there is an XYZ person who is film into his profile, like I'm a React.js developer or a Monstack developer, and when we just ask questions to him, he is like कि भैया sir questions ऐसे मैं बता नहीं सकता बाई थ्योरी, but मैं करके दिखा दूंगा। एंड जब वो एक्चुअली उनमें से करके दिखा दूंगा, तो ऑडियंस में से भी 60% ऑडियंस ऐसी होती है जो करते टाइम भी फिर कहते हैं भैया ये तो मैंने गूगल से कॉपी करता है। इट्स ग्रेट, स्टार्टिंग में मैं भी करता हूँ गूगल से कॉपी, मुझे भी आज के टाइम पे आधी ज्यादा चीजें गूगल से ही मतलब देख के पता चलती है, बट अगर आप बेसिक सी चीजें जाते हैं, इट सिंबलाइजेस कि आपको वो चीज की पूरी नॉलेज नहीं है। सो पूरी नॉलेज ऑफ अ टेक स्टैक, a good mind thinking power, like if you are talking to somebody you should use your words precisely, क्योंकि यहाँ पर आप कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पर आपका कोई टेक राउंड नहीं हो रहा, यहाँ पर वही 2-3 लाइंस ही होते हैं जो डिसाइड कर देते हैं कि you are being getting hired or not, उसके बाद के प्रोसेसेस बाद में आते हैं। थर्ड थिंग इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल परस्यूइंग माय इंजीनियरिंग सक्सेस, कि अपने अराउंड की जो एक कम्युनिटी आप अपनी बिल्ड करो, दैट शुड बी वेरी गुड। नो मैटर आप टियर 2 टियर 3 लोअर टियर 3 कॉलेज में हो, आपके आसपास के 3 बंदे ना दिन में हर बार कोडशेफ विजिट कर रहे हो, गिटहब रेपोज रीड कर रहे हो, स्टैक ओवरफ्लोज पे अपने क्वेरीज फाउंड आउट कर रहे हो, और कोई कोड एक्सटेंशन उनका खुल रहा हो, ये 4 चीजें अगर आपका साथ वाला बंदा कर रहा है, प्लस जो भी कर रहा है, देन ही इज अ गुड पार्टनर फॉर यू, because he's the one who is going with a mindset, he has some plans, and be with someone who has some kind of plans. Don't be with someone who is not going to have a clue like what he or she needs to do. So being a good circle, right? And being in a good circle, so that you can develop an environment and you can develop your thinking. Now the fourth thing is that
personal brand building thing. You build your brand by many and various platforms. LinkedIn is there, Twitter is there. There are many people who just visit LinkedIn or Twitter. Like उनसे पूछो तो यार लास्ट टाइम ट्विटर का विजिट करा था, हाँ यार वो कुछ एक रिट्वीट करना था कोविड का, तो उसको करने के लिए हम गए थे वहां पर, बट अब वो ट्विटर प्रोफाइल हमारी बैठी हुई है। लिंक्डइन कब करा था, अरे यार वो लास्ट टाइम इंटर्नशिप सर्च कर रहे थे ना, तो उस टाइम पे वो कॉलेज वालों ने कहा था कि मैं लिंक्डइन प्रोफाइल बनाऊं, तो हमने बना ली थी। नो, कॉलेज वाले नहीं कहेंगे आपको लिंक्डइन बनाने को, आपने सेकंड ईयर में लिंक्डइन बनानी है, आपने सेकंड ईयर में ट्विटर पे आना है और अपनी पर्सनल ब्रांड बनानी है। ब्रांड कैसे बनानी है, कुछ नहीं करना है, ब्रांड बनाना इज नॉट अ हुआ। जो भी कर रहे हो, मान लो कि आज मैंने रिएक्ट जेएस पे एक वेबसाइट डिजाइन करी है, सिंपल साइन अप साइन इन, मैं जाकर ट्विटर पे डालूंगा, ट्विटर पे डालूंगा, मेरे से मान लो 40 पीपल्स कनेक्टेड है, लिंक्डइन पे डालूंगा 500 कनेक्शन, ठीक है, 500 कनेक्शन से देखा, किसी 3 के बंदे के दिमाग में चला जाएगा कि हाँ ओंकार ओझा जो है ही इज इनटू रिएक्ट और ही इज इनटू मर्न स्टैक पे वो काम कर रहा, चला गया। ऐसे करते 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 जब जाओगे तो वो 3 का 15 भी होगा, 15 का 45 भी होगा, 45 का फिर 295 भी होगा। So you never know who is waiting for you to have a React developer, who is waiting for you as a Monstack developer, but it's only about like he is not finding one. And if you are the one who is knocking the door ki first sir may I in, then you should be the one who is getting this opportunities. That's really absolutely. So now can we discuss about how to get into the startups? अगर किसी के पास कोई आइडिया है तो वो अपने स्टार्टअप का स्टार्ट कैसे कर सकता है? What will the first step to start? Yeah. So starting thing. See, startup जब हमने स्टार्ट करा था, हमारे दिमाग में फर्स्ट ईयर अराउंड या फिर उससे पहले ऐसा कोई 12th हम प्लान लेके नहीं चलते थे कि स्टार्टअप ही स्टार्ट करना। It's about going into things, evolving and finding the best match for yourself. Like you find our best matches on many of the platforms, finding a best match for yourself. So when we started SkillValley, it's not always about कि हाँ यार स्टार्टअप करना है, ये करना है, pre-seed round we have just cleared like 1 month back, pre-seed round उठानी है, अब ये करना है। It's about like we were just evolving, and जब आपको प्रोसेस से प्यार मिलने लगे ना, तब समझ लो वो चीज आपके लिए बनी। सो स्टार्टअप करने वाले बंदों के लिए सबसे जो 2-3 हैबिट्स होती हैं, अगर वो अपनी 2-3 हैबिट्स अपने रेगुलर जीवन में डाल दें, सो दैट वुड बी अ थिंग दैट विल हेल्प देम टू एक्सेल वेरी मच। द फर्स्ट थिंग एंड फॉरमोस्ट थिंग, इट्स नॉट ओनली अबाउट पीपल स्टार्टिंग अ स्टार्टअप बट अ जनरलाइज्ड थिंग इज रीडिंग बुक्स। बुक रीडिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर है। इससे क्या आपका शो करता है, इफ यू आर गोना गेट इनटू बुक रीडिंग, इट इज गोइंग टू शो योर पेशेंस लेवल कि हाँ यू हैव इन दिस टेक वर्ल्ड, जब दिन भर लैपटॉप के सामने बैठे होते हो, स्टिल आपके पास वो पेशेंस है कि आप किसी 200 पन्ने की किताब को एक टाइम लेके समझ के उसको खत्म करना चाहते हो और उसको समझना चाहते हो। सो बुक रीडिंग इज अ थिंग। सेकंड थिंग इज पीपल की जजमेंट करना। पीपल आपसे अगर कोई बंदा बात कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े हमने जब देखे हैं, टॉक अबाउट like I do one-on-one meet on various platforms, that was Twitter or something, तो वहां पर जब मैं बंदों से बात करता हूं तो वो बड़ी ना बारीक चीज कह के चले जाते हैं, तो उन बारीक चीजों को पकड़ने का आपके पास एक वो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस comes from building things and ensuring that you are building constantly. Third thing is personal brand building, but brand building यहाँ पर भी आती है। सेम बात, अगर कोई बंदा मेरे को जान रहा है कि ओंकार ओझा is doing something, then it is related to SkillValley as well, because I'm handling the growth part over there. I'm absolutely over there. And fourth thing is reading legal documentations. You will have to read those 500 pages robust documentations, but yeah, you need to go through that phase also, because वो सारी चीजें होती है, you can't neglect it, because startup ecosystem में ऐसे बहुत सारे बंदे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होते हैं आपसे, और कब आपको बंदा किस पॉइंट पे ट्रिक करके चला जाए एंड आपको वो चीज महीने बाद पता चलती है, तो बहुत सारी चीजें पता रखनी पड़ेगी। एंड फोर्थ थिंग इज be precise with the people you talk with. You should know कि कहाँ तक आपका जो लैंग्वेज कंट्रोल है या फिर कहाँ तक आपका एक बैरियर है जहां तक आप किसी के साथ एक्सटेंड कर सकते हो। It's always about that thing. So there are 3-4 things and just deep dive into it. Don't afraid of failures. Last year around on like October November session, we failed with our product. We were constantly thinking like what we should do now, but currently we have our pre-seed round cleared, and we are projecting for this coming 8 months to be the one-stop platforms for the students to come and fetch their dream job, whether it is on foreign startups or Indian startups, and make a culture around it. So amazing. That's really great, and your platform will be helping tons and millions of students, I can guarantee, because that is really amazing. और मैंने खुद ने आज तक ऐसा प्लेटफॉर्म कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है यूज करके, so it will be really good. So yeah, now our bucket of question is empty, जो कि मैं हर बार बताता हूँ. So I think we discussed on all parts. So thank you so much Onkar for getting connected with me. Surely this video will help a lot of people who have their startup ideas और जिन्हें implement कैसे करना है, I think उन्हें clear हो गया होगा how to make their own brand and what should be the patience level, books, and all this idea whatever you mentioned here. It will be really helpful for a lot of people. So thank you so much Onkar. Now I think we need to close this meet. Thank you so much once again. Yeah, thanks TechKrit community, and thanks Onkar for inviting me for this such a wonderful session. I really enjoyed talking to you, and one last message that I want to give to the audience is just don't wait for someone to knock your door. Just be the door beater or door breaker when you want to excel in any kind of things, whether it is startups, whether it is tech, or any kind of things that you want to innovate. Cheers to all. Thank you.
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो, एंड आई विल शेयर ऑल द पीपीटीज एंड डॉक्यूमेंट्स जो भी मेरे पास होगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, और मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल TechKrit फॉर दीज काइंड ऑफ वीडियोस। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।